Hello and welcome. You are watching IndianExpress.com and today we will talk about the new national education policy that has been approved by the Union Cabinet. Now this policy, as the government says, aims to make India a global knowledge superpower. ये पॉलिसी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाने पे भी फोकस करती है, with reformed exams, vocational education for school students and making higher educational institutions multidisciplinary. इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, जिसे HRD मिनिस्ट्री कहते हैं, उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी कर दिया जाएगा. सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पॉलिसी के, इसके बारे में हम बात करेंगे. बट बिफोर दैट जस्ट लिसन टू व्हाट द यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर एंड HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल सेड यस्टरडे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 21वीं सदी के एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई. यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, देश के लगभग 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15 लाख से भी अधिक स्कूल, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी अधिक 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राओं को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूं. पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य, शिक्षा का गंतव्य हिंदुस्तान होगा. And now let's talk about the key takeaways of the NEP. So the first major highlight of this policy is that the government school will now offer preschool education, that is nursery, LKG, UKG. ये नर्सरी, LKG, UKG जो कि अभी तक प्राइवेट स्कूल्स में हुआ करते थे, ये अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी होगा. इसके अलावा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन 10+2 फार्मूला, यानी कि क्लास 10 तक पढ़ाई होती है और फिर +2 क्लास 11 एंड 12. इसको चेंज करके 5+3+3+4 के फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया है. नाउ व्हाट इज दिस 5+3+3+4 फार्मूला? सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे तो 3 इयर्स से 8 इयर्स के एज के जो बच्चे हैं उन्हें, यानी कि 5 साल का जो बीच का ड्यूरेशन होता है, उन्हें नर्सरी से लेके क्लास 1 या 2 तक पढ़ाई की जाएगी एंड दैट विल बी द फाउंडेशनल लर्निंग स्कूल. इसके बाद 8 साल से 11 साल तक एज के जो बच्चे हैं उन्हें क्लास 3 और क्लास 3 से लेके क्लास 5 की पढ़ाई की जाएगी एंड दैट विल बी कॉल्ड प्रिपरेटरी स्कूल. फिर 11 साल से 14 साल के एज में क्लास 6 से क्लास 8 की पढ़ाई होगी, दैट विल बी कॉल्ड मिडिल स्कूल. और फिर 14 ईयर्स के एज से लेके 18 ईयर्स तक आपकी क्लास 9 से क्लास 12 तक की पढ़ाई की जाएगी एंड दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी स्कूल. So in India, usually after class 10, students opt for science, commerce or arts in their class 11 and 12. Now, as per this policy, अगर कोई स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करता है तो उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि ही कैन स्टडी आर्ट एज वेल. इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया गया है एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस किया गया है एंड दैट मीन्स लाइक इफ़ यू आर गुड एट पेंटिंग, स्केचिंग, स्पोर्ट्स एंड ऑल, देन these things will have bearing on your report card also. Now we have seen in India students undergoing a lot of pressure during their board exams, and now this policy aims to make the board exams much easier. The policy states board exam will be redesigned to make them easier in the sense that they will test primarily core capacities and competencies rather than months of coaching and memorization. अगर सिंपल भाषा में कहे तो स्टूडेंट्स के लर्निंग कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में, ना कि उनमें रट्टा मारने का जो एबिलिटी है वो कितना है. तो ये एक बड़ा चेंज है. इसके अलावा द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द ऑप्शन ऑफ 2 बोर्ड एग्जाम्स फॉर स्टूडेंट्स. नाउ one will be the main exam and other will be optional if you want to appear for the exam and if you want to improve your score, so you can appear for the board exam twice. Now this is also a big change. Now the policy also advises the use of mother tongue, regional language or local language as medium of instruction in school till class 5. Besides that, talking about the 3 language formula, जो कि एक controversial subject रहा है पिछले कुछ सालों से, the policy says the freedom to choose the language should be left with the student, state and region. Now if we talk about higher education, the government has once again introduced the 4-year undergraduate program
Now, if you remember, the 4-year undergraduate program was first introduced by Delhi University in the year 2013, but it was discontinued after a lot of protest. Now, the government also now gives option to the colleges to have a 3-year undergraduate program or a 4-year undergraduate program. Now, if a student pursues 4-year program with research, he or she will be eligible for direct admission for PhD. So the new education policy also offers multiple exit option for the undergraduate students. Now, what does that mean? It means that students have the option to leave their course whenever they want, or maybe if they have to drop out of the course because of unforeseen circumstances. But there is a compensation for this. Now, the new policy states that if student completes 1 year, he or she will get a certificate. If a student completes 2 years, he will get a diploma. And then 3 years will get them a degree, and if the student pursues a 4-year program with research, he or she will be eligible for direct admission for a PhD. With this, the government has done away with the MPhil course, and the minimum eligibility for PhD will now either be a 4-year program with research or masters after a 3-year program. Now, another major change of this policy is that there is a focus on making higher educational institution multidisciplinary. Now, what does that mean? जैसे अगर आप IITs टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, तो उसमें गवर्नमेंट का फोकस है कि these institutes should also offer courses like arts, commerce, science and other subjects. Now, single stream institution will fade out by 2040, and that is the aim of this new education policy. इसके अलावा बहुत सारे रेगुलेटर हैं जो कि इंडियन एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं, लाइक UGC, AICTE. तो इन सारे रेगुलेटर्स को एबॉलिश करके एक सिंगल रेगुलेटर बनाने की बात कही गई है. Well, our reporters also spoke to the vice chancellors of Jamia Millia Islamia University and the Jawaharlal Nehru University, and they have said that this education policy is bringing many positive changes to the education system. अब क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा. That's all for now. For more news update, keep logging on to IndianExpress.com.